बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 16 थर्ड लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। थर्ड लेक्चर में हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा एंडो स्केलेटन। ये ऐसा स्केलेटन है जो कि बॉडी के अंदर होगा और इसके ऊपर और इसके साथ जो है मसल्स जो अटैच हुए हुए होंगे। एंडोस्केलेटन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है। इसकी कंपोजिशन अगर देखी जाए तो इसमें टिश्यूज, बोन्स एंड कार्टिलेज मौजूद है। बोन्स एंड कार्टिलेज जो है दे आर मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। They consist of cells which are embedded in the matrix, and that the cells are called collagen. Collagen is a protein which is embedded in the matrix of the bones and the cartilage. Now we can see in that diagram here are some pieces which are cartilage cells. नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके टाइप्स की। जो एंडोस्केलेटन है दैट कंटेन बोन और मे बी कार्टिलेज। Bone is the most rigid form of the connective tissues. Collagen fiber of the bones are hardened by the calcium carbonate. इसका अगर फंक्शन देखा जाए तो that provides support to the arms and the legs. अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो that is a spongy and compact bone. There are two parts of the bone, that is spongy bone and the compact bone. Spongy bone is lighter and rich in blood vessels and highly porous. The cavities contain the bone marrow where blood cells are formed. There are three types of bones which are osteoblast and osteocyte and osteoclast. Osteoblast जो हैं these are the bone forming cells. Osteocyte are the mature bone cells and osteoclast are the bone dissolving or bone killing cells. Here is a diagram which is showing the different type of that is a stem cell जो कि developmental जो time होता है उस दौरान पे stem cells होते हैं which generate osteoblast or osteocyte, and there may be osteoclast which can dissolve these osteocytes. And here is the diagram which is showing the bone. Internal portion is a spongy bone and external portion is a compact and very smooth and rigid. Inner bone is a porous and it contains bone marrow. Next is the development of bone. How bone is developed during the early development. Bone जो है that replace the cartilage because during development cartilage पहले बनती है in the fetus और उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता develop होती है in the bone. तो सबसे पहले osteoclast जो है they dissolve cartilage and then उस जगह पर osteoblast जो है नए बनना शुरू हो जाएंगे which are bone forming cells. With the जैसे जैसे bone growth होगी with the bone growth osteoblast that they will entrapped in the matrix which will harden the bone. Now we will discuss about the cartilage. Cartilage is the most softer than the bone, and it is again made up of connective tissue that covers the end of the bones at joints and support the flexible portion of the nose and the external ear. इसके अलावा हम बात करेंगे कि जो living cells of cartilage and they are known as chondrocyte, which is very important MCQs. And there are no blood vessels which are penetrate in the cartilage in as that in the case of bone. Here are some types of cartilage. First is the elastic and then hyaline and fibro. Elastic जिसमें definitely flexibility ज़्यादा होती है, that is the most flexible portion, and then cartilage and which are present in the ear and in the epiglottis. And hyaline का मतलब होता है smooth. So it is the most abundant type in the human body and found at the movable joints. And fibro cartilage जो है ये आपकी book में जिक्र नहीं है, but they are found in the vertebral कॉलम. फिब्रोकार्टिलेज जो है वो नी एंड वर्टिब्रल कॉलम में हमें मिलता है. नेक्स्ट देयर आर सम मेजर फंक्शंस ऑफ द स्केलेटल सिस्टम. फर्स्ट इज अ सपोर्ट एंड शेप. स्केलेटन जो है वो पूरी बॉडी को सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, शेप भी प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन. बोन्स जो हैं वो हमारी बॉडी के जो खास तौर पे इंटरनल ऑर्गन्स हैं लाइक ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, हार्ट, लंग्स वगैरह, इनको प्रोटेक्ट किया जाता है विद द हार्ड स्केलेटन. मूवमेंट डेफिनेटली ये पूरी बॉडी को मूव करवाने में हेल्प करता है क्योंकि इसके साथ मसल्स अटैच हैं. इसके अलावा मिनरल्स होमोस्टेसिस से क्या मुराद है कि बोन्स के अंदर मुख्तलिफ तरह के मिनरल्स जो हैं वो डिजोल्व भी होते रहते हैं और बोन्स उसमें अपनी बॉडी में से बोन्स में से मिनरल्स जो हैं वो निकलते भी रहते हैं. सो इस तरह से बॉडी के अंदर होमोस्टेसिस का एक अमल जो है वो जारी रहता है. इसके अलावा बोन मैरो, बोन्स के अंदर जो बोन मैरो है दैट विल जनरेट द ब्लड सेल्स लाइक रेड ब्लड सेल्स वगैरह जो हैं वो बोन मैरो से बनते हैं. Now we will discuss about human skeleton. Human skeleton बहुत ही important topic है. Human skeleton has two major parts. First is the axial part and axial skeleton, or second one is the appendicular skeleton. We will discuss first axial skeleton about the skull. Axial skeleton is further divided into skull, cranium, and ribs and one sternum.
Okay, skull is further divided into two types of areas, parts. First is the cranium, and second one is the facial bone. Cranium has total six bones, from which parental and temporal are the paired bones, and frontal, occipital, sphenoid, and ethmoid are the non-paired bones. And the facial bone contain different type of bones, like total there are 14 bones, among which the maxilla and zygomatic, nasal, lacrimal, and palatine, and inferior concha. These are the paired bones. That means 12, 6 twos are 12, and mandible and vomer, these are the non-paired bones. Here is a diagram which is showing very clearly the location of different bones: parietal bone, temporal bone, occipital bone, and this is the frontal bone, saphenite bone, ethmoid bone, and here is a lacrimal, which is a facial bone, nasal, zygomatic, and maxilla. हायर्ड बोन आपकी बुक में इसमें शामिल नहीं है, लेकिन ये हायर्ड बोन जो है ये हमारी गर्दन के ऊपर जो है बोलते हुए जो थोड़ी सी बोन ऊपर नीचे हो रही होती है, दैट इज द हायर्ड बोन. एंड हेयर इज द मैंडिबल, लोअर जॉ को हम मैंडिबल का नेम देते हैं. Next is the vertebral column. Vertebral column contains 33 bones. The vertebral column is further divided into four parts. Cervical contains seven vertebrae. First two vertebrae are called atlas and axis. Then thoracic portion, which contains 12 vertebrae, and then lumbar portion, which contains 5 vertebrae. Pelvic portion contains total 9 vertebrae, among which 5 vertebrae form the sacrum, which is the anterior part, and cortex जो है that contain 4 vertebrae. Here is a diagram which is showing the vertebral column into four parts: cervical, thoracic, lumbar, and sacrum. Pelvic contains sacrum and the cortex. Here is that is the side spinal column, and you can see the curve. और ये naturally ऐसे curve होता है ताकि bending जो है वो ज़्यादा easy हो सके. अगर ये बिल्कुल straight होगा तो bending जो है वो मुश्किल होती चली जाएगी. Now we will discuss about the rib cage. Rib cage total there are 12 pairs of rib which are articulated from the thoracic vertebrae. Total there are 12 pairs, like 24 ribs मौजूद हैं जो कि पीछे vertebral column से निकलकर आगे आके ये center में sternum है उसके साथ attach होती हैं. Total जो है ये 12 pairs हैं. इनमें से first 7 जो हैं they are directly attached with the sternum, so they are called true bones. Next 8, 9, and 10, these are called false rib because they are attached with the sternum with the help of an arch, which is the cartilagic arch. और इसके साथ ये sternum के साथ अटैच होते हैं, जबकि लास्ट की दो जो बोन्स हैं, दो जो रिब पेयर हैं, they are not attached with the sternum, and so they are known as floating ribs. Okay, students, we have completed our today's topic. इसके बारे में जितनी भी कोई discussion होगी, we will discuss in our discussion lecture. Okay, Allah Hafiz, take care.